मॉर्निंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग आदित्य, saying having fun while studying. Very good. Good morning, good afternoon Om Gupta. Good afternoon Tanjala. Tanjala is asking, sir, do we see recording videos? This is answer is no. We are live. Good afternoon Chandana, K Venkat Lakshmi, Rakshita, Abhimanyu, Niranjan, Devansh, Ruchita, Tasneem, Prince, Bhavna, Kamlesh, good afternoon. Sania, Shyam, Nikita, Komal, good afternoon. So, as we have discussed, good afternoon, Krishna, Roshan, Shalini, Richa, Prachi, Ashwini, Sai, Jia, very good afternoon. Vikas, Somali, Suparva, Shubham, Anju, Pankaj, Vandana, Kumari Priya, Pooja, Nafisa, Tanvi, good afternoon everyone. Good afternoon. Chandana, Sneha, Khushi, Atima, Piyush, Vinayaka, Kritika, very good afternoon everyone. चलिए बच्चों, देखो ऐसा है, मैं सब लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को भूख का टाइम हो जाएगा. तो अपन स्टार्ट करते हैं. जैसे we have already discussed in the last class that we will start this day with the test of day 1. But before day test, I am taking the revision of what we have discussed in the last class. एक छोटा सा point था, एक small point that was problem. They are giving problem to each and everyone. That is the voidable contract. So in revision, I will take it. So let's start the revision. Contract versus agreement. We have discussed. First step is promise, and promise equals to offer plus acceptance. And if the consideration is added in the promise, it will become the agreement, and agreement is enforceable by law, it becomes the contract, right? What are the essentials which are given in section 10? Offer and acceptance, that means there must be two parties. Intention to create a legal relationship, there must not be a social agreement. The concerned case law was Balfour versus Balfour. Legal formalities, if required, must be there. Meaning on which contract is entered should be clear, otherwise contract will be void. Performance should be possible, should be free. Competent parties, yani parties should be capable to enter into the contract. Lawful object and consideration, the agreement not expressly declared. So what is given in section 10, I think in fact I should say that you will get detailed analysis in next 7 lectures. ठीक है, next including today, next 8 lectures में आपको ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करने को मिलेंगी, प्रॉपर चैप्टर. ठीक है. Classification of the contract on the basis of validity. Valid contract in which all the essential elements exist. Voidable contract, this is the very crucial point था बच्चों के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे था, बट बहुत सिंपल है. Normally contract is valid or void. Valid means essentials are there. Void means something is missing of essential points. ठीक है, सारे essential हैं वो valid है, कुछ missing है वो void है. अब इन दोनों के बीच में फंसा voidable. Voidable, actually the contract is valid, but in these type of contract, one party has right to avoid it, and until he avoid, the contract is perfectly valid. If he avoid the contract, contract will be void. यानी कि ये कुछ specific contract हुए, ये 3 कैटेगरी आती हैं, अभी डिस्कस करूंगा मैं. कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हुए जिनमें
कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड, बट वो कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर पार्टी को राइट दे रहा है कि आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, आप अपनी लायबिलिटी से बाहर। लेकिन जब तक ये पार्टी ऐसा नहीं करती है तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। या फिर पार्टी ने वो राइट लिया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा। एक ही पार्टी को राइट होता है। ये 3 केस हैं। There are 3 cases for voidable contract. First, if the consent of one party is not free. Free means something he is not genuinely ready. He is pressurized to give the consent. In that case, the party whose consent is not free has the right to cancel the contract. If he can cancel the contract, contract will be void. He does not cancel the contract will be valid. Right? Second case, one party, the contract was entered between 2 parties. One party wants to perform, but other party is stopping him to perform. Contract हुआ 2 लोगों के बीच में, एक पार्टी को जो परफॉर्म करना चाह रही है, दूसरी परफॉर्म करने से रोक रही है। उस केस में जो पहली पार्टी है, he has the right, the first party has the right to avoid the contract. वो चाहे तो अवॉइड कर सकती है, चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है, उसको एक बेनिफिट। And the third case, where the contract is based on the time limit, something to perform within the time. And if the work is performance or work is not completed within that time, in that case, the aggrieved, जिसके संग धोखा हुआ, जिसने नुकसान हो रहा है, वो इसको कैंसिल कर सकता है, कैंसिल करने का। ये 3 केस हैं केवल वॉइडेबल के लिए, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करना जिसको लॉ ने मना किया है। इफ एनी एक्ट, एनी वर्क इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ एंड यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर दोज वर्क, देन कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। इलीगल एंड ऑल्सो वॉइड। Illegal is always void, but void has any other reason other than illegal for becoming a void. Unenforceable, कुछ limitations हैं, कुछ writing में नहीं है, कोई formalities नहीं है, so that they are called unenforceable. On the basis of formation, the contract is divided, classified in express contract, implied contract, or quasi contract. Expressed by word, spoken, or written. It means it may be written or it may be oral. Some of you were asking in last class, sir, whether the contract can be oral. Definitely yes. Someone has asked, sir, how to prove? And देखिए, कितना पूछा था कैसे prove करेंगे कि oral है? देखिए, this depends on the party who claim in the court. He has to prove that the contract was entered. Court take the decision on the basis of evidence. And evidence has to be submitted by the party who submitted the case, right? Implied, other than oral or written, by conduct. Quasi, it was actually not created, not entered actually, but contract due to some specific circumstances. I have taken the decision of example of pizza. On the basis of performance, executed, when both the parties have performed their obligation, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया? एग्जीक्यूटेड यानी कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूटरी, the 2 types, unilateral and bilateral. Unilateral मतलब one party, bilateral by both parties. One party has to perform, yet एक ने कर दिया दूसरे ने नहीं करा, that is unilateral. Performance is pending from on the part of both parties, it is called bilateral, right? So this was the revision, बच्चों. Now the time for test. Listen, I will ask 10 questions and this is self-assessment test. You just prepare the sheet, self-assessment test के नाम से, answer sheet. Answer by student, you have to write your answer. Correct answer, you have to mention correct answer. I will definitely, give the answer after the question. Then you check what score you have gained. ठीक है? So please prepare this sheet. जब तक मैं बच्चों गुड मॉर्निंग और कर दूं। गुड मॉर्निंग पलक, गुड आफ्टरनून पलक, भावना, नागमणि, भक्ति, यत्नेश, रोजालिन, पवित्रा,
सैयदा नसीम, तेजल, श्रेया, नंदिनी, प्रेक्षा, सहाना, लिंगेश्वरन, सैनी, ऋषिका, धनेश्वरी, शिवम गुप्ता, भावना, सिंगम, यत्नेश, कशिश, गुड आफ्टरनून, खुशी, संतोष, आतिमा, निकिता, गुड आफ्टरनून एवरीवन बच्चों, सुहाना, गुनगुन, सौम्या, कृष्णा, मिस कुमारी, हेलो, श्रेया, यत्नेश, आई थिंक सभी लोगों से हो गया. दुर्गा सर, गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon, sir. One day I will be a CA. Definitely, my blessing will always be with you. When a Salon is asking, when A sells his car to B for ₹5, you bought from B. If A does not tell this code, then it will be valid. She is asking if A sells the car B by fraud for ₹5, and A does not complain, then it is valid contract, definitely. सर मेरा मीडियम हिंदी का है, पेपर किस लैंग्वेज में आएगा? आई थिंक दोनों लैंग्वेज में आपको होता है पेपर, आपको दोनों में जो आपका लैंग्वेज है उसमें आपको आंसर करना है, ठीक है. चलिए, देयर इज समथिंग एरर फ्रॉम समथिंग टेक्निकल एरर फ्रॉम मनस्वी बोकारे. बार बार यही आप ही का नाम प्रिंट हो रहा है बेटा, एक बार चेक करो क्या एरर है आपके में सिस्टम में. आंसर नहीं भेजना है. अभी जो टेस्ट ले रहा हूँ उसका आंसर आपको नहीं भेजना. यू नीड नॉट टू सेंड द आंसर. दिस इज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. यू हैव टू राइट द आंसर ऑन योर शीट. ओके. सृजन सर, लॉ के सेक्शन के डेफिनेशन बुक से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर लिखना है एग्जाम में. आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, इन द 10th लेक्चर. भूमिका, प्रणाम सर. प्रणाम मैडम. क्वासी हैव डिस्कस बेटा इन द लास्ट लेक्चर. क्वासी में क्वासी इज एक्चुअली नॉट एंटर्ड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस लायबिलिटीज आर अराइजिंग. क्वासी में कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं होता है, लेकिन सिचुएशंस की वजह से पेमेंट की लायबिलिटी आ जाती है. इसे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. कल के लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ, रिकॉर्डेड होगा, प्लीज एक बार देख लो बच्चे, वरना आज का लेक्चर मिस हो जाएगा आपका. One more important question. When A asks B to buy his car for 1 lakh and B accept, after some time A does not want to sell his car, B sue A. A ने कॉन्टेक्ट किया B से कि वो कार खरीदेगा, बाद में मना कर दी. नहीं भैया, कॉन्टेक्ट हो गया तो मना नहीं कर सकते, केस कोर्ट में जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, बहुत देर हो गई. बिफोर स्टार्टिंग प्लीज मीट चाचा चौधरी. His brain is sharper than computer. He will answer today's question. मैंने इनको बुलाया है. I've invited him to answer your questions. ठीक है? Test questions. First question before you. The Indian Contract Act came into force on Chachaji will give the answer. What is the answer? A. 1st September 1872. You have to write on your sheet. Then I will check how many marks you have gained. क्या पूछ रहे हैं? You need not to send answer. बच्चों कब सीखोगे? मेरी बात सुन लिया करो. नहीं सुनोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? The term contract defined in which of the following section of Indian Contract Act? Section 2 clause A, 2 clause B, 2 clause E, 2 clause H.
The answer is D, section 2, clause H. Next question. A promise is offer plus enforceability, offer plus legal obligations, offer plus acceptance, offer only. अदिति सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अभी तो बेटा एक ही लेक्चर हुआ है, चुपचाप आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस यही मेरा पर्पस है। इसने फर्स्ट यू फोकस ऑन टेस्ट, देन आई विल टेक योर क्वेरी, ओके। द आंसर इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, a contract is an agreement enforceability by law to indulge in litigation with malified intention for social obligation. Which is the right option? Aman, I will take your query, just wait. Okay. Superva, wait for 10th lecture. I will definitely tell you how to present in the exam. Beta, thoda sa wait karo, bachche mere. Answer is A. And a contract is an agreement enforceability by law. Next. Which of the following is not essential element of a valid contract? Registration of agreement, free consent of parties, competency of parties, lawful consideration and object. ये क्वेश्चन तो कहीं और भी आया था। Answer is A, registration of agreement. Next question. A contract in which under the terms of a contract nothing remains to be done. Nothing remains to be done by either party is known as executed, executory, unilateral, none of these. कुछ बच्चे बेचारे मेरे मानते ही नहीं मेरी बात, मैं आंसर भेज जा रहे हैं और जो प्रॉब्लम मिस हो जाती है। भेजो बेटा, कोई बात नहीं। प्रियंका कह रही है सर आपने मेरा नाम नहीं बोला गुड आफ्टरनून के लिए। नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, मेरे बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए कोई भी। चलो, आंसर इज एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट, an agreement with a party who is not competent to contract is void, voidable, valid, illegal. The answer is A, void. Next, A agrees to sell his white car to B for rupees 50,000 or rupees 70,000. It is valid. It is not valid. It is a clerical mistake. It is not a valid agreement as it is forbidden by law for unlawful consideration, not certain, impossible. क्या रीजन है? Answer is not certain. The amount is 50,000 or 70,000. An agreement enforceable by law under the Indian Contract Act may be in writing only, oral only, registered only, either A or B. कार्तिकेय जी प्रणाम। ठीक है,
ये मुझे आंसर क्यों भेज रहे हैं? बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको आंसर नहीं भेजने हैं, मुझे भेजे, मुझे तो पता ही है आंसर, मुझे क्यों भेज रहे हो? मैं नाम लूंगा नहीं आंसर का, जस्ट वेस्टिंग योर एफर्ट्स. आंसर इज डी. It may be writing, it may be oral. Last question. A invites B for his son's wedding. B accept the invitation. In this case, there is an agreement, contract, acceptance, offer. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर बताना ही पड़ेगा मुझे. पहले आप लोग सोचो क्या आंसर है. इनवाइट किया वेडिंग में, ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्टेंस है, ऑफर है. The answer is agreement because it is social agreement and this is not a contract. Agreement है but enforceability by law नहीं है. Social agreement, right? So how many of you get 10 on 10? Congratulations, all of you who got 10 on 10. पर अभी है ना, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ये तो टेस्ट हो गया, अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन. आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. But before it, just a common query from your side, sir. How to prepare the notes? देखिए, every person, everyone has the own way to present the notes, to make the notes, how to retain the contents of the act. So you should prepare yourself, but you can take the um, help of my summary notes. What I have given as summary notes, you can take the printouts and you can add or less for your convenience. Or also you can take out the printout of these PPTs I have uploaded. So that will be helpful for you, right? So mostly got 10 on 10. चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों सभी लोगों को. एंड दिस इज द फर्स्ट टेस्ट एंड आई विश कि आप नेक्स्ट टेस्ट में ऑल ऑफ यू गेट 10 on 10. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रपोजल. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिस्कस किया था एसेंशियल्स एंड क्लासिफिकेशन. नाउ वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एसेंशियल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. Niranjana is asking, sir, where is consideration in the last question? देखिए, the question was asked just to remember the points what we have discussed in the last class. So according to me, that was the clear case of social agreement. That's why I have not explained the question very broad way. ठीक है, चलिए एमडी साहब आप क्वेरी पूछिए, अब मैं जवाब दूंगा. मुझे क्वेरी आपकी दिखी नहीं अभी तक, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. तो स्टार्ट करते हैं प्रपोजल से. व्हाट इज द प्रपोजल? प्रपोजल, जस्ट अ मोमेंट, इज द ऑफर. अब एज पर द लॉ, a person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or action. This definition contains two words, doing or abstaining. Just read this definition with my words. Please listen. A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do anything with a view to obtaining the assent of that other to such act. एक आदमी को कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल या ऑफर दिया है जब वो अपनी इच्छा बताए किसी दूसरे को कुछ करने की. When someone express his willingness to do something to another person, then it is said the person has made an offer. Clear? This
act, the offer may be for doing something or abstaining from doing something. कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए. That's why after to do, the word or abstain from doing is added. So a person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do something or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or action. जब एक आदमी दूसरे को अपनी इच्छा बताता है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट के साथ कि सामने वाला उस पर अपनी सहमति दे दे, then it is said he made a proposal. When a person made his willingness to do or not to do something, then it's called offer is made. See the example. Mr. X says to Mr. Y, will you purchase my car for rupees 10,000? Now Mr. X is making an offer to Mr. Y. Example 38, Mr. X desires to sell his car to Mr. Y for 10,000. There is no contract. उसने कहा I desire to sell. He is not ready to sell. तो मेरी इच्छा है बेचने की. It is not an offer. Clear offer होना चाहिए. The offer must be very much clear intention to do anything. राइट, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने. राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्टेन? एब्स्टेन मतलब कुछ नहीं करना, नथिंग, टू स्टॉप समथिंग. राइट, सो thus for a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something, but mere expression of willingness does not constitute an. केवल अपनी इच्छा जाहिर करना वो ऑफर नहीं. मैं ए से पूछता हूं क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? दिस इज ऑफर. मैं ए से कहता हूं मेरी इच्छा है कि आप मेरी कार खरीद लो. दिस इज नॉट एन ऑफर. Example 39, where A tells B that he desires to marry by the end of 2004. It does not constitute an offer of marriage by A to B. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be to obtain the assent of others. For example, further, in the above example, A further adds, will you marry me? Now it is an offer. Clear है मेरे ख्याल से? Yes, sir. In the example 38, there is no offer. Yes, there is no offer because he just expressing his willingness. He is not making the offer. Tanvi, I have discussed the meaning of abstinence. Abstinence means not to do something. It's called abstinence. Now, what are the parties to contract? First, the person who making the offer is called promisor or offerer. To whom offer is made is called offeree. And after the accepting the offer, the offeree becomes promisee or acceptor. जिसने ऑफर किया वो क्या कहलाएगा बच्चों? ऑफरर. जिसको ऑफर किया गया वो कहलाएगा ऑफरी. और ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बन जाएगा बच्चे? promisee या acceptor. See, right? Now, types of offer. Types of offer. What are the types of offer? First is general offer, means offer made to world at large. I ask public, I want to sell my car. I want to sell my car for rupees 2 lakh. Anyone can purchase. Give me the acceptance. This is an public offer. It is called general offer. And in case of general offer, anyone who first accept the offer becomes the acceptor and offer is closed.
जनरल ऑफर मतलब होता है ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, वर्ल्ड एट लार्ज को बनाया गया। जैसे मैंने पूछा मुझे अपनी कार बेचनी है, 2 लाख रुपए में कोई खरीदना चाहता है, ए ने कहा यस आई एम रेडी टू परचेज, ऑफर को एक्सेप्ट हो गया, अब ऑफर किसी और के लिए नहीं बचा। ऑफर व्हेन जनरल ऑफर व्हेन फर्स्टली एक्सेप्टेड it comes to end, another person cannot accept it, right? Offer made to world at large, it is an offer made to public in general and hence anyone can accept and do the desired act. Section 8 of the Indian Contract Act point out that performance of the condition of a proposal is an acceptance of the proposal. क्या मतलब हुआ? Listen. Offer made to section 8 says that performance of the condition of a proposal is an acceptance of the proposal. कोई कंडीशन लगी हुई है वो पूरा कर दिया, एक्सेप्टेंस माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, I asked Mr. X, will you purchase my car? If you want to purchase, send me the advance of 10,000. I asked Mr. X, will you purchase my car for 2 lakh rupees? If your answer is yes, then send me the advance of rupees 10,000. Mr. X does not reply but send me the advance of 10,000. He fulfills the condition in the offer. It means offer is accepted. Clear? अगर ऑफर में कंडीशन लगी है पूरी हो जाती है तो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गई. नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक केस है, प्लीज लिसन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Carbolic small ball company advertised that a reward would be given to any person who would suffer from influenza disease after using the medicine as per the printed instruction. One lady, Mrs. Carlyle, purchased and used the medicine according to the printed direction but suffered from influenza. She claimed for the reward. It was decided by the court that she could recover the reward as she had accepted the offer by complying with the terms of offer. Please read this case once again, then I will explain you. थोड़ा सा पढ़ लें, then I will take your queries. देखिए केस वॉज क्या था कि कार्बोलिक कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि जो हमारी मेडिसिन की इंस्ट्रक्शंस को, हमारी जो मेडिसिन उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको पढ़ के कंज्यूम करेगा, उसके बाद भी अगर कोई बीमारी हो गई तो कंपनी लायबल होगी. मिसेस कार्लिन ने वो मेडिसिन खरीदी, इंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग यूज किया उसे, बट उसको क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा हो गया. उन्होंने रिवॉर्ड क्लेम किया, कंपनी ने मना किया, कहता हम कैसे मान लें. तो कोर्ट ने कहा नहीं. कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने इंस्ट्रक्शन पढ़ के कंज्यूम किया, इसका मतलब उन्होंने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू आर लायबल. तो मैं एम रिपीटिंग इन इंग्लिश. Actually, the company is selling the medicines, right? Company is selling the medicines. Company has given the instructions that consume the medicine as per our instruction, and even that there is a disease to anyone after consuming our medicine, then we will compensate. Mrs. Carlyle purchased the medicine and used according to direction and got influenza, right? She claimed the reward. Company has denied, but court said that that was general offer by the company and she consumed as per the instruction. Now company is liable as after consuming the medicine she got the influenza. Okay. One more example.
An advertisement was given in the newspaper announcing a reward for the tracing out a missing person. It can be accepted by any person who trace out the missing person and is entitled to claim the reward. एक एडवर्टाइजमेंट निकला न्यूज़पेपर में कि कोई जो कोई किसी चीज को ढूंढ के लाएगा, कोई मिसिंग पर्सन ढूंढ के लाएगा, उसे हम रिवॉर्ड देंगे। तो जो भी ढूंढ के लाएगा उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकालना, किसी कोई भी चीज को लाने के लिए उसको रिवॉर्ड निकालना, दिस इज एन जनरल ऑफर। क्लियर? सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिक ऑफर। Specific offer means offer made to a general person, a specific person, and that offer can be accepted only by that specific person only. Other person's acceptance is not considered. Specific offer होता है जिस पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर किया जाए और उसको वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसने वो ऑफर की, जिसको ऑफर किया जाएगा। कोई और कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। Example 42, he now offers to sell his car to Michelle at a certain cost. This is a specific offer. Other person cannot accept, only Michelle can accept or not. The right to accept is only with the Michelle because the offer is just made to only Michelle. Okay. Third, a cross offer. Cross offer means that two persons making same offer in the same time to each other. For example, I asked Mr. X, will you purchase? I asked Mr. X, will you purchase my car for 1 lakh rupees? At the same time, he asked me, I have asked Mr. X by writing a letter. And the same time, Mr. X asked me by writing a letter, will you sell your car for 1 lakh rupees? Same thing, but same time. This is called cross offer. As per the code, the cross offer are not valid or void because code says acceptance must be after the offer. But in case of cross offer, both offers are made the same time. The court is not in position to decide which is made first, which is offer, which is acceptance. So court says in case of cross offer, both are void. क्रॉस ऑफर वो होते हैं जो दो लोगों ने ऑफर किए सेम थिंग के लिए बट सेम टाइम। मैंने एक्स से लिख के पूछा कागज पे, क्या तुम मेरी कार 1 लाख में खरीदोगे? एक्स ने भी सेम बात लिख के भेजी मुझे, क्या आप अपनी कार 1 लाख में बेचेंगे? बात तो एक ही है, लेकिन लॉ ने कहा कि भाई दिक्कत क्या है कि ऑफर हमेशा एक्सेप्टेंस से पहले होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफर के बाद होना चाहिए, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है, क्रॉस ऑफर में दोनों सेम टाइम पर हैं, तो किसे ऑफर माने किसे एक्सेप्टेंस माने? तो लॉ ने कहा भैया ये दोनों ही कैंसिल माने जाएंगे। तो रीड व्हाट द लॉ सेज अबाउट क्रॉस ऑफर। When two parties make identical offer to each other, when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offer are called cross offer. There is not binding contract in such a case, as the court will not consider one offer as offer and other offer as acceptance, and therefore there is no contract. See, if A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakh, but without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car at rupees 2 lakh from A, it is not an acceptance, as B was not aware of the proposal by A. It is only cross offer or cross proposal. Please read once again. Counter offer. Counter offer means conditional acceptance. See the example. Listen. I asked Mr. X. वही एग्जाम्पल लेके चल रहा है, सेम एग्जाम्पल. I asked Mr. X, will you purchase
will you purchase my car for 2 lakh rupees? I asked Mr. X, will you purchase my car for 2 lakh rupees? X says, okay, sir, but not for 2 lakh, for 1.5 lakh. मैंने एक्स से पूछा क्या तुम मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे? एक्स ने कहा खरीद तो लूंगा सर, लेकिन 1.5 लाख. It means X has not accepted the offer in which way what I have said. So, in fact, he made a new offer. He made a new offer before me. Will you sell your car for 1.5 lakh? And my original offer was closed, left. जब एक्स ने कहा कि सर मैं खरीद तो लूंगा, 1.5 लाख में खरीदूंगा, इसका मतलब उसने मेरे ऑफर की तो इज्जत ही नहीं करी, उड़ा दिया उसे और अपना नया ऑफर साथ में रख दिया. जैसे ही उसका नया ऑफर आया 1.5 लाख वाला, मेरा जो ऑफर था वो लैप्स हो गया, खत्म हो गया. As Mr. X given the conditional acceptance, it means he has made an conditional acceptance. He made a counter offer. He made a new offer. And when a counter offer is made, the original offer left, close. Now the ball is in my court that whether I want to sell my car for 1.5 lakh or not. Right? The interesting thing. I said no, I won't sell in 1.5 lakh. Then X says, okay, sir, I am ready to purchase at 2 lakh. No, he cannot enforce because the offer of 2 lakh was left. Now he's making again third offer. Sir, please sell your car for 2 lakh. What was the case? I asked Mr. X to purchase my car for 2 lakh rupees. This is the original offer. He denied and presented another offer for 1.5 lakh. The second offer is called counter offer. And when the counter offer comes, original offer left. Original offer khatam ho gaya. I denied no. I don't want to sell at 1.5. Second offer khatam. Again, he told me, okay, sir, I am accepting your first offer, original offer. Not possible, boss, because that offer was left. वो offer तो खत्म हो गया. Actually, he is making a third offer before me. Sir, will you sell your car for 2 lakh rupees? And the second offer which was made by him for 1.5 lakh, that is his conditional acceptance, is called counter offer. जो उसने 1.5 लाख वाला ऑफर दिया वो कहलाएगा काउंटर ऑफर, जो उसका कंडीशनल एक्सेप्टेंस. ठीक है, लिसन. When offeree imposes condition which have the effect of modifying or varying the offer is called counter offer. When offeree accepts the offer with modification and variation in the terms of original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts the rejection of the original. Clear itni baat? See the example. A offers to sell his plot to B for rupees 10 lakh. B agrees to buy it for 8 lakhs. It amounts to counter offer. It may result in the termination of the offer of A, and if later on B agrees to buy the plot at 10 lakh, A may, because that was a fresh offer. Clear itni baat? Open offer, standing offer or continuing offer. See, offer to public at large for certain period, that is like a sale for 3 days. Tender खुले हुए हैं. An offer is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing offer, that is open or continuing offer. So these were the types of offer. First is general offer, clear hai, public at large, specific offer, specific person, cross offer, 2 offers at the same time, counter offer, conditional acceptance, and standing offer, that is general offer for a specific time. Okay. Now the legal rules of offer, but before it I am taking your queries. क्या क्या है बच्चों बताओ फटाफट से.
जनरल ऑफर, स्पेसिफिक और ऑफर, काउंटर ऑफर, ये क्या बता रहे हैं मुझे? सर जनरल ऑफर लाइक ऑक्शन, नो एक्चुअली इन ऑक्शन the person who making the bid, he is making the offer. ऑक्शनर जिसने ऑक्शन अरेंज करी वो ऑफर नहीं कर रहा है. The person who making the bid, who giving this price is called the bidder. The bidder is making the offer and he is making the offer to the auctioneer जिसने ऑक्शन अरेंज करी है. So that is specific offer, not general offer. और क्या क्वेरी है बच्चों? Sir, is it enough to for us to study this note or we need more explanation? देखिए, these notes are for helping you. You must go through the study model by ICI. ठीक है? Have discussed. Sir, Carlyle versus Carbolic small ball companies example is this is not a invitation to offer. This general offer. The example of Carlyle versus Carbolic company is general offer. ठीक है? और क्या पूछा? Sir, if the acceptance is without knowledge of reward, this will be accepted. If offer is accepted without the condition of knowledge of reward, it is not a valid. I think we will discuss in the next class. ये आएगा अभी, इस पे एग्जाम्पल है पूरा. Sir, how court know the offer is cross? देखिए, कोर्ट को तो जब ही मालूम पड़ेगा जब उसके पास मैटर जाएगा. ठीक है? अगर विदाउट कोर्ट सब सेटलमेंट होगा तो जरूरत ही नहीं है. बार्गेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ काउंटर ऑफर. ठीक है? Singham is asking, sir, in cross offer, if A writes he wants to buy his car for 2 lakh, at the same time B writes to want to purchase his car for 1 lakh, then what happens? Is it cross offer or not? The same time they are making the same offer, same point of time, then it is cross offer. Shivam is asking, sir, how can court say that Mrs. Carlyle used medicine as per the instruction? देखिए, in this case, I have not taken all the facts. I've just to this is the example to help for him for understanding. Court definitely have arranged the court have definitely decided on the basis of evidence. So you need not to be worried. So Raj is saying, sir, can you please general offer? So क्या मतलब है बच्चे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. एक एक चीज को आप 10-10 बार लिख रहे हो बच्चे. ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. आप एक बार लिखो, मैं सारी क्वेरी लूंगा बच्चे आपकी. Manish is asking, sir, can I prefer other publication book? देखिए, I don't think you need to refer other books. पहले आप अपनी स्टडी मॉड्यूल पढ़ लो बच्चों. IPO is standing offer. IPO is not standing offer. IPO is invitation to offer. क्रॉस ऑफर में डिस्कस कर चुका 2-3 बार बच्चे. सर, your notes enough for cracking exam. मैंने इसलिए बनाया बच्चे, एग्जाम आपका एग्जाम क्रैक हो जाए इसलिए नोट्स बनाया. बट यू मस्ट गो थ्रू द स्टडी मॉड्यूल ऑफ ICI. उत्कर्ष क्या पूछ रहे हैं? देखिए, उत्कर्ष का आया सर बताइए, लेकिन मैं समझ नहीं, उसकी क्वेरी नहीं दिख रही मुझे.
Nandini is saying, sir, in case of marriage proposal, cross offer will be present. I don't think so. क्रॉस ऑफर में कैंसिल हो जाएंगे दोनों ऑफर. General offer, standing offer, general offer is without time limit, you can say, and standing offer, general offer with time limit. उत्कर्ष बेटा एक बार दोबारा क्वेरी भेजो आप मुझे. स्पेसिफिक ऑफर डिस्कस कर चुका मैं. स्पेसिफिक ऑफर मींस ऑफर टू स्पेसिफिक पर्सन. Advertisement in newspaper to find something and offering the reward is an offer, but all other advertisement are invitation to offer. वो डिस्कस करेंगे अभी हम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लीगल रूल्स ऑफ द ऑफर, यहाँ तक चलते हैं. इसके बाद प्रीति, आप बेटा पहले भी शायद आपने क्वेश्चन पूछा है सर, रिकॉर्डिंग लेक्चर है. नहीं बेटा, लाइव तभी तो सुन रहा हूँ आपकी बात. In general offer, Gautam is asking, sir, in general offer and specific offer, both are made to particular person. No, general offer is made to public at large. कहाँ थे बेटा, सुना तो करो मेरे लाल. चलो भाई, देखो ऐसी क्वेरी मत पूछो कि बाकी बच्चे तुम बद्दुआ दें, कोई भी बच्चा. ठीक है ना, और बच्चों की बद्दुआ बुरी लगती है, बच्चों को दूसरे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लीगल रूल्स. The offer must be capable of creating legal action, not the social one. A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation. The invitation to marriage, an invitation to join a friend for dinner is in the marriage does not create a legal relationship. It is social agreement. We have discussed in the last class. The offer must be certain, definite, and not vague. Vague means unclear, you can say. If the terms of an offer are vague or indefinite, its acceptance cannot create any contractual relationship. See the example. X says to Y, I will sell you a car. X has 3 cars. Offer is not definite because X has not cleared which car he wants to sell. 48, A offers to sell B 100 quintals of oil. Listen, this is important example. 48. A offers to sell B 100 quintals of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The offer is not valid as it is not clear. Right? But if in the above example, A is dealer in the coconut oil, means only one category of oil, now it is a valid offer. A ने B को ऑफर किया कि आप मुझे, A ने ऑफर किया कि मैं आपको 100 टन ऑयल बेचूंगा, लेकिन उसे ये बताया नहीं कौन सा ऑयल बेच रहा है, कोकोनट बेच रहा है, मस्टर्ड बेच रहा है, एनी अदर. दिस इज नॉट एन ऑफर बिकॉज क्लियर नहीं है. लेकिन अगर मान लीजिए A केवल एक ही कैटेगरी में ऑयल में डील करता है, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल में, then it is a valid offer because option है ही नहीं, क्लियर है. Offer must be communicated. अंडरलाइन कीजिए communicated और लिखिए इसका मतलब. कम्युनिकेशन मतलब होता है to make someone understand. उसको बोलना नहीं, उसको सुनना नहीं, उसको समझना. कम्युनिकेशन. एक छोटा बच्चा भी अपनी माँ को समझा देता है कब उसे भूख लगी, कब प्यास लगी, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन. An offer to be complete must be communicated to the person to whom if it is made. An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not create any right on the. Acceptance किया लेकिन ऑफर का पता ही नहीं था, ignorance से हुआ, तो वो acceptance नहीं माना जाएगा. See the example of गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला. ये अभी केस आया था, बच्चे पूछ रहे थे. Gauri Dutt sent his servant L to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. L traced the boy in ignorance of this announcement. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. He was not entitled to the reward as he
did not know the offer. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी। क्या केस है? गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन को भेजा कि भैया उसका भतीजा खो गया, ढूंढ के लाओ, और जब वो ढूंढने गया उसने अनाउंस कर दिया कि जो ढूंढ के लाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। एल को पता है, लालमन को पता ही नहीं था कि ऐसा रिवॉर्ड अनाउंस हुआ है। वो ढूंढ के तो लाया और बच्चे को उसने दे दिया। बाद में मालूम पड़ा ये तो रिवॉर्ड था यार, निकल गया मेरे हाथ से। उसने केस फाइल किया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा नो, आपने जब बच्चे को लाके दिया, एक्सेप्टेंस किया, आपको पता था कि ऑफर है? ही सेड नो। जब ऑफर का ही नहीं पता था तो एक्सेप्टेंस कैसे हो जाए? एंड इन दैट केस लालमन कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, राइट? The offer must be made with the view to obtaining the consent of the offeree. यानी कि जो आदमी, the person who making the offer, his intention should be there that सामने वाली party, the other party, accept his offer. The other party accept his offer, right? I have printed the picture of, I think most of you have watched the movie Sholay. The Amitabh Bachchan Saab made an offer before the Mausi for the marriage of Mr. Dharmendra. But his conversation does not show that he is ready, he is willing to accept that consent of the Mausi. So law says the offer इसलिए जब किया जाए तो इच्छा होनी चाहिए ऑफर करते समय कि हम जो ऑफर कर रहे हैं सामने वाला उस पर हाँ कर दे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, an offer may be conditional, acceptance never be conditional. If acceptance is conditional, then it becomes a counter offer. Law says offer conditional होना चाहिए, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, और अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। Law says offer may have the condition and only on the fulfillment of that condition acceptance should be there, but acceptance should not have the condition. An offer can be made subject to any terms and condition by the offerer. The offeree will have to accept all the terms of offer, otherwise the contract will be treated as invalid. For example, offerer may ask for payment by RTGS, NEFT. The offeree will have to accept all the terms of offer, otherwise the contract will be treated as invalid. अगर ऑफर में कुछ कंडीशन आई है तो एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन होना जरूरी है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर इतनी बात? The offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to accept. ऑफर में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका नहीं होना एक्सेप्टेंस। Offer should not have any term the non-compliance would amount to acceptance. For example, I asked Mr. X, will you purchase my car for 10 lakh rupees? If you do not reply, I will accept your no reply as acceptance. मैंने X से पूछा क्या तुम मेरी कार 10 लाख में खरीदोगे? अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा तुमने एक्सेप्ट कर लिया. This is not a valid. A proposes B to purchase his Android mobile for rupees 500, and if no reply by him in a week, it shall be assumed that we had accepted the proposal. This is not a contract. क्या है क्वेश्चन? A ने B से पूछा क्या तुम मेरा मोबाइल 5,000 में 500 में खरीदोगे? अगर एक हफ्ते में रिप्लाई नहीं किया तो मान लो तुमने एक्सेप्ट कर लिया. This is not a valid. ठीक है? Offer may be specific or general. We have already discussed this. I am not taking this point again. Offer may be expressed or implied. Expressed or implied, expressed by word, oral or written, implied by conduct. See the example. A boy starts cleaning the scooter as it stops on the traffic signal without being asked to do so. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. Here, boy makes an implied offer. क्या कहा इसमें? क्रॉसिंग पर आप गए, वहां पर एक लड़का आपकी गाड़ी को साफ करने लगता है, आप उसे मना नहीं करते हैं. It means he is making implied offer and you are impliedly accepting it. क्लियर इतनी बात?
चलिए यहाँ तक क्वेरी। इससे पहले जो 8 पॉइंट तक क्वेरी लेता हूँ बच्चों, पहले मैं आपकी ऑफर आई हैव डिस्कस बेटा। सर व्हाट विल हैपन इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड पर्सन इज डेड, इज इट इनवैलिड और void? If contract of offer demands the personal skill of the acceptor and acceptor is dead, the contract is void. Otherwise, his legal has to perform. Sir, advertisement is also general offer. Sir, advertisement. I have told you, if advertisement is concerned with the reward, then it is general offer. Otherwise, other advertisements are the invitation to offer. Sir, in case in Carlyle versus Mockball, if any other person sue the company for same reason, no, other person is filing the suit. If he has consumed the medicine, then okay. भाई जिसके संग नुकसान हुआ वही तो क्लेम करेगा। नोट्स बेटे पोर्टल पे पड़े हुए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, जो आपकी ऐप है उसी में नोट्स लगे हुए हैं। सर क्रॉस ऑफर कैन बी काउंटर ऑफर, आंसर इज नो। उत्कर्ष सर voidable of void means बेटा आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इज। आप प्लीज एक बार कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिए, और आज मॉर्निंग में मैंने आपको डिस्कस किया है। काउंटर ऑफर मींस कंडीशनल एक्सेप्टेंस। If A offers to buy my car for 10,000 though through a message, we do not the same offer a day after, but without seeing the message, so the timing is not same, but ignorance is there. Is the cross offer? Answer is no, because cross offer should be the same time. ठीक है, ये हो गया। Krishna is asking, sir, counter offer labs when new offer is made. Counter offer, original offer labs. If counter offer is made. Invitation to offer, Preeti, just wait. I've taken this slide. Yogeshwaran, sir, your teaching is very interesting. Thank you. आगे क्या है? Offer can be positive or negative. Offer can be for doing something or abstain from doing something. कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। For example, अगर सर मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप अगर अपने घर के बाहर ये पार्किंग ना बनाएं, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। दिस इज द ऑफर फॉर नॉट टू डूइंग समथिंग। क्रॉस ऑफर बताया मैंने बेटा, जब दो लोग सेम बात करते हैं सेम टाइम पैरामीटर पे, देन इट इज अ क्रॉस ऑफर। सर अगर लालमन वर्सेस गौरीदत्त की जगह पर गौरीदत्त और लालमन लिख देंगे तो प्रॉब्लम होगा क्या? आई डोंट थिंक सो कि आपके लेवल पर इसकी कोई प्रॉब्लम आएगी। एग्जाम्पल नंबर 49। एक्चुअली जो डीलर है वो केवल एक ही क्वालिटी के ऑयल में डील करता है, कोकोनट ऑयल। तो जब वो एक ही, उस पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है ऑयल,
तो मुझसे अगर मैं उसको क्वालिटी का डिस्कस नहीं करूं, लेकिन ये बोलूं नहीं कि कोकोनट ऑयल चाहिए, तब भी ऑफर वैलिड ही होगा ना बच्चे। भाई अनसर्टेनिटी कब होती है? जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो हमारे पास, जब ऑप्शन ही नहीं है। General offer I have discussed. Vague means with you can say jहाँ clarity now vague without certain meaning. रक्षिता व्हाट आर यू डूइंग बेटा? आपकी क्वेरी कम से कम 40 टाइम्स मेरे पास पड़ी है, एक ही क्वेरी। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी पोर्टल पे पड़ी है बेटा, आप देख लीजिएगा। साक्षी ब्रेक मिलेगा लेकिन पेनल्टी शूट आउट के बाद, अभी नहीं मिलेगा। बैठे रहो अभी आराम से थोड़ी देर। मजा नहीं आ रहा? बोर हो रहे हो क्या बच्चों? नहीं हो रहे तो पढ़ो थोड़ा सा। Sir, sales agent make our consent whether we do not want to give a consent at first, but there is no view. I don't think, but please clear करो क्या पूछना चाह रहे हो आप? चलिए, लीगल रूल्स में अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, offer is different from a mere statement of intention. An invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus and an advertisement. Law says offer is something different from statement of intention, invitation to offer, communication of information, prospectus or advertisement. First point, statement of intention and announcement. Example number 52. Listen. A father wrote his son about his wish of making him the owner of all this property is mere statement of intention. एक फादर ने अपने बेटे को लिखा, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी का ओनर बना दूं। ये उसकी इच्छा है, केवल उसका स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट एन ऑफर। The son replied, okay, Papa, I am ready. No, this is not an offer. Right? Next point, an announcement to give scholarship to children scoring more than 95% in 12th board is not again an offer. ये भी ऑफर नहीं है, ये इंटेंशन है, एक स्टेटमेंट है, अनाउंसमेंट। Again, important case, offer must be distinguished from answer to question. Offer आंसर से डिफरेंट है। See the example number 54. Harvey versus Fassi case है, the case of Harvey versus Fassi. In the given case, the Harvey through a telegram Fassi two questions. Harvey ने दो क्वेश्चन किए। पहला, will you sell us bumper hall pen? And दूसरा, telegraph lowest cash price. Fassi replied through the telegram that the lowest price of the bumper hall pen is £900. Harvey sent another telegram stating that we agree to buy the bumper hall pen at £900. However, the Fassi refused to sell the property at that price. Harvey sued the defendant contending that they had made an offer to sell the property at £900 and therefore they are bound by the offer. What was the case? Harvey made two questions. Will you sell us bumper hall pen? Second is telegraph the lowest price. Fassi replied only one question, that is second question. Price is £900, but he does not reply. He didn't reply of the first question, whether he will sell or not. And the court decided same thing. It was decided by the Privy Council
that while Harvey had asked two questions, Fessy replied only to the second question by quoting the price, but reserved that answer with regard to their willingness to sell. Thus, they made no offer at all. काउंसिल ने कहा, कोर्ट ने कहा, भैया ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे गए, फैसी ने एक का जवाब दिया, प्राइस तो बताया, पर उसने ये नहीं बताया कि वो बेचना चाहता है या नहीं, वो राइट उसके पास रहा, तो ये ऑफर नहीं माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, the offer must be distinguished from invitation to offer. See, listen the example. I went to the restaurant and see the menu card, and in menu card the dosa price is 200 rupees. I ordered the dosa seeing the menu card, but the waiter replied, sir, the price has been revised and the dosa price today is 300. The question arises, whether can I force him to sell the dosa at 200? मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां मेनू कार्ड देखा, डोसा लिखा हुआ था 200 रुपए का, मैंने इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर, and on the basis of invitation to offer you are making the offer. On the basis of invitation to offer you are making the offer. Invitation to offer is first step before the offer. It means in restaurant I am making the offer, will you sell your dosa to 200 rupees? Waiter replied no. It means he has not accepted the offer. Now I cannot force him to sell the dosa. मेनू कार्ड में हम जब रेस्टोरेंट पहुंचे तो मेनू कार्ड देख के हमने जो कहा वो हम उसको ऑफर कर रहे हैं, क्या तुम डोसा बेचोगे? दुकानदार ऑफर नहीं कर रहा है, या रेस्टोरेंट वाला ऑफर नहीं कर रहा है कि सब मेरा डोसा 200 रुपए खरीदोगे क्या, नहीं। मेनू कार्ड जो है वो इन्विटेशन टू ऑफर है, उसको देख के हम ऑफर कर रहे हैं, विल यू सेल द डोसा एट 200 रुपीज? One more thing in this example, I ordered the dosa seeing the menu card, and waiter presented the dosa before me. He served the dosa before me. I consumed it. After that, waiter asked for 300 rupees. What will be your answer? मैंने मेन्यू कार्ड देखा, डोसा लिखा हुआ 200 रुपए, मैंने ऑर्डर किया, वेटर ने लाके दिया, मैंने डोसा खा लिया, उसके बाद वेटर ने कहा सर ये 300 रुपए का है। अब क्या होगा? क्या वेटर क्लेम कर सकता है? आंसर इज नो। I made the offer, but when the waiter served the dosa, it means he has given the implied acceptance on my offer. Now waiter can claim only 200 rupees. जब मेनू कार्ड आया, मैंने ऑफर किया, उसके बाद क्या हुआ? वेटर ने वो डोसा ला के रख दिया, इसका मतलब वेटर ने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया इम्प्लाइडली। अब वेटर मुझसे 300 रुपए क्लेम नहीं कर सकता, वो केवल 200 रुपए क्लेम कर सकता। See the C point. An invitation to offer is different from offer. Quotation, catalogs, advertisement in newspapers for sale are not offer. These are invitation to public to make an offer. Bidding in an auction is also an invitation to offer. Example 55. The price list of goods does not constitute an offer for sale of certain goods on the listed price. It is an invitation to offer. Advertisement for sale of goods by auction is an invitation to offer. I told you just before, the advertisement for reward is only offer. Other advertisement are not offered, they are invitation to offer. Exception, we again point number C, when advertisement in newspaper is made for the reward, it is general offer to public. Mr. X lost his car, he gives an advertisement is in newspaper, then he will reward of 10,000 who will give the information about his car. This is an offer. And all other advertisement are never offered, they are invitation to offer. Now the time for penalty shootout 3.
सर लॉ का पेपर कितने मार्क्स का होता है? आई थिंक यू हैव नॉट जॉइन द फर्स्ट क्लास. आई टोल्ड यू द लॉ पेपर इज ऑफ 60 मार्क्स एट प्रेजेंट. Why you are mentioning I have scored 94% in HFC? बेटे आप जो हम 2 घंटे का टाइम है हमारे पास, इसमें जो हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने की, उस पे फोकस कीजिए प्लीज. रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी लोगों से. Sir, if the Harvey had asked, will you sell the bumper hall pen? If yes, then telegraph the lowest price. ये she is saying that if Harvey had asked the question in this way, will you sell your bumper hall pen? If yes, then telegraph the lowest price. And Fassi has mentioned the lowest price. Now that is the acceptance of it. Sir, A don't know about offer but has performed, then according to section 8, it would be a contract. A don't know about offer but has performed, then according to section 8, it would be a contract. चलिए तो डिस्कस करेंगे अभी ब्रेक के बाद, इस पॉइंट पर आराम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट द पेनल्टी शूटआउट. रेडी? सेंड ऑल द आंसर्स इन वन शॉट ओनली. बच्चों एक बार में भेजने हैं आपको. First question. Ram offers Sham to sell his bike for rupees 20,000. Sham replied that he can purchase at rupees 15,000 only. It is counter offer, cross offer, specific offer, general offer. Next question, बच्चों. Even where there is a counter offer, the original offer exists. Is it true, partly true, false? None of the above. Mohan went to a restaurant and after watching menu card, he ordered a veg biryani, the price of which in menu card was rupees 200. The waiter replied that actually the biryani price is 250, wrongly printed in the menu card. Whether Mohan can compel to sell the biryani at rupees 200? बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चे मेरी बात नहीं समझ पाते हैं क्या? सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक बार में भेजने हैं, आप वन बाय वन भेज रहे हैं. जो बच्चों की जनरल प्रॉब्लम होगी वो मुझसे मिस हो जाएगी इतने सारी क्वेरीज के बाद. ठीक है ना? प्लीज एक साथ भेजिए बच्चों. नेक्स्ट. अब बिड प्लेयर जो बिडिंग करता है इन आईपीएल is an implied offer to buy, express offer to buy, invitation to offer to buy, none of the above. Next question. A person advertised in newspaper an award to find his lost car. This is a general offer, a specific offer, invitation to offer, none of the above. A wrote a letter to B offering to purchase his car for rupees 1 lakh. With the condition that in case B does not reply within 7 days, A will assume that B has accepted the offer. Whether it is valid offer?
Which of the following is valid offer? Advertisement in newspaper, price list, advertisement including reward, none of these, none of the above. So स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. Ram offers Sham to sell his bike for rupees 20,000. Sham replied that he can purchase at rupees 15,000 only. It is an counter offer. Next. If there is a counter offer, original offer left. Answer option is C, false. Mohan cannot compel. Bid player is an express offer. Clear offer बोलता है, प्राइस बोलता है मुझसे. Find the lost card. Award is general offer. This is not a valid offer. And last one. Advertisement including reward. C. So who is the lucky one giving all the correct answers? एक query थी, sir, sales agent make our consent with the whether we do not want to give consent. देखिए agent है तो he has right or he has given consent on your behalf, the consent is valid. चलिए आंसर चेक करते हैं. The first one is Miss Shreya Agarwal. Congratulations. मेरे पास जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ बच्चों में. Next one is Miss Dhainika. Congratulations. बच्चों आप लोग है ना कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर लिखा करो, बी सी जो भी आंसर है आपका, ठीक है ना.
And next one is Mr. Miss Ruhani Jain. Okay. So congratulations all of you. Now we are taking the break of 5 minutes at this place. After 5 minutes, we will rejoin and complete the topic. ठीक है 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चों 5 मिनट बाद मिलते हैं
ओके वेलकम बच्चों। हार्वे वर्सेस फैसी का केस बेटा मैं समझा चुका कई बार। हार्वे ने 2 क्वेश्चन पूछे फैसी से, क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस, बट फैसी हैज रिप्लाइड ओनली सेकंड क्वेश्चन नॉट द फर्स्ट, so that was not an offer. Clear? Now come to the acceptance. It is 3:30 over, so जल्दी से हमें करना है बेटे, आपका टाइम लोगों को खराब ना हो। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी। देखो बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी लोगों से, सुन लो मेरी बात ध्यान से, बड़ा विनम्र निवेदन है बेटा। आप लोग क्वेरी एक बार लिख के भेजिए, 50-50 बार लिख के आप भेज रहे हैं क्वेरी, जो जेन्युइन क्वेरी है वो मिस हो जाती है स्क्रॉल करने, राइट। एक बार क्वेरी लिख के भेजिए, मैं आज सब क्वेरी की कोशिश करूंगा सारी लेने की। मिस इस वजह से होती है क्योंकि किसी और ने इतनी क्वेरी डाल रखी होती है कि वो मेन क्वेरी मिस हो गई कहीं से। दूसरा, जो हम पढ़ रहे हैं उस पे आप क्वेरी बेस करिए। अब मैंने सर 12th में इतने परसेंट आए, मैंने इसमें इतना गेन किया, व्हाट इज द व्हाट इज द मतलब ऑथेंटिसिटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड्स एट दिस पॉइंट। बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो आपको बददुआ दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मत करिए प्लीज। Acceptance, a proposal or offer is said to have been accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent to the proposal to do or not to do something. यानी कि जिसको ऑफर किया गया, जो ऑफरी था, उसने अपनी कंसेंट दे दी उसको करने के लिए या नहीं करने के लिए, तो क्या कहा जाएगा, वो एक्सेप्ट हो गया। टू सम अप इन शॉर्ट, acceptance is the significance of the assent to the offer by the offer. Legal rules of acceptance. First is, acceptance must be absolute, completed and unqualified without condition. So no if, no but, only yes. This is the acceptance. All the terms and conditions must be accepted, otherwise there is no acceptance. It is called an counter offer. If conditional acceptance, क्या कहलाएगा वो, counter offer. See the example 58. A inquiries from B, will you purchase my car for 1 lakh rupees? And B replies, I shall purchase your car for 80,000. There is no acceptance. It is simply a counter proposal. A counter proposal is the offer by the offeree and can result in a contract only if it is accepted by other party. A ने B से पूछा, क्या तुम मेरी कार 1 लाख में खरीदोगे? B ने कहा 1 लाख में नहीं, मैं 80,000 में खरीदूंगा। क्या हुआ, काउंटर ऑफर, राइट। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जिसको कहा गया उसकी समझ में आ जाए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। सी, A propose B to marry him. B informs A's sister that she is ready to marry, but his sister didn't inform A about the acceptance of proposal. There is no contract as acceptance was not communicated to A ने। A ने B को शादी के लिए पूछा, B ने A की सिस्टर को बता दिया, सिस्टर ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड नहीं हुआ। और जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होता है तो वो ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। See the example, then we will come to the provisions. If the offerer prescribe acceptance to messenger, that is peon, and the offeree sends acceptance by email, there is no acceptance of the offer if the offerer informs the offeree that acceptance is not according to the mode prescribed. But if the offerer fails to do so, he will presume that he has accepted the offer and it is a valid contract. क्या है, ऑफर ने कहा एक्सेप्टर को कि आप अगर ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो कृपया पियोन के जरिए एक्सेप्टेंस भिजवाएं, राइट। एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस भेज दी बाय ईमेल। दिस एक्सेप्टेंस इज नॉट एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड, राइट।
but if the offerer fails to do so, लेकिन ऑफर ने नहीं कहा कि आपका एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में नहीं है, वो शांत रहा, इसका मतलब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, ऑफर को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में नहीं। लिसन वंस अगेन, if acceptance is not according to the mode prescribed, the offerer may inform to the offeree within reasonable time that your acceptance is not according to the mode prescribed, and may insist, may ask to offeree that offer must be accepted in the prescribed mode only. But if offerer does not react, he accept the acceptance, then acceptance will be valid. क्या कहा मैंने आपसे? अगर ऑफर में कंडीशन लगी हुई है कि एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में किसी तरीके से होना चाहिए, तो ये ड्यूटी बनती है ऑफरी की उसी मोड में, उसी प्रेस्क्राइब मोड में वो एक्सेप्टेंस भेजे। लेकिन बाय चांस एक्सेप्टर ने किसी और तरीके से एक्सेप्टेंस भेज दी, तो ऑफरर के पास दो ऑप्शन है। पहला, वो उसको बोले कि भैया आपने प्रेस्क्राइब मोड में नहीं भेजा है, इस प्रेस्क्राइब मोड में भेजिए। तो जब तक ऑफरी प्रेस्क्राइब मोड में नहीं भेजेगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं। दूसरा ऑप्शन, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में नहीं भेजी लेकिन ऑफर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, देन एक्सेप्टेंस विल बी क्लियर। इतनी बात। टाइम लिमिट, देखिए अगर ऑफर में टाइम लिमिट है कि आपको इतने टाइम में एक्सेप्ट करना है, इफ ऑफर हैज टाइम लिमिट देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन दैट टाइम लिमिट, बट इफ ऑफर डज नॉट हैव एनी टाइम लिमिट then acceptance must be in reasonable time. But what is the reasonable time depends upon situation to situation. Acceptance must be given within the specified time limit, if any, and if no time is stipulated, acceptance must be given within the reasonable time and before the offer lapses. Example number 61, A offered to sell B 50 kgs of banana at rupees 500. B communicated the acceptance after 4 days. Such is not a valid contract as bananas being perishable item could not stay for a period of week. 4 days is not reasonable time in this. A ने ऑफर किया 50 किलो बनाना का 500 रुपए का और 4 दिन बाद रिप्लाई किया, ये एक्सेप्टेंस नहीं, वैलिड नहीं है, क्योंकि बनाना क्या है, पेरिशेबल है, खराब होने वाला है, जल्दी खराब हो जाएगा। तो 4 दिन बाद अगर एक्सेप्ट करोगे तो वैलिड नहीं माना जाए। Mere silence is not an acceptance. Silence कभी भी acceptance नहीं होता। For example, A asked B. A made an offer to B, but B does not reply. A cannot assume his silence as acceptance. The acceptance on offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer, unless the offeree has any previous conduct indicated that his silence is evidence of acceptance. Law says कि साइलेंट कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता, लेकिन अगर पहले भी ऐसा होता है, वो चुपचाप रहा है, शांत रहा है और उसने एक्सेप्टेंस को माना है कि मेरी शांति मेरा एक्सेप्टेंस है, तो ये माना जा सकता है। जनरल केस में साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता। सीधा एग्जांपल नंबर 61, A subscribe for the weekly magazine for 1 year. A subscribe for the weekly magazine for 1 year. Even after the expiry of his subscription, the magazine company continued to send him magazine for 5 years. ए ने मैगजीन 1 साल के लिए सब्सक्राइब की थी, लेकिन उसके बाद भी मैगजीन आती रही 5 साल तक। ए continued to use the magazine but denied for the payment. Now A would be liable to pay his continued use of magazine. Magazine was his acceptance of offer. क्या कहा लॉ ने कि आपने 1 साल के लिए सब्सक्राइब किया और मैगजीन आती रही, तो आपने पढ़ते भी तो रहे, आप उसे, आपने मैगजीन पढ़ना चालू कर दिया, इसमें ये आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया कि आपको मैगजीन चाहिए, आप बाद में पेमेंट करने के लिए मना नहीं कर सकते। प्लीज पढ़िए इसे बच्चों।
Mr. Ubaid Valmiki is asking, sir, my question is, if I want to if I went to restaurant and bought a pizza for 200, it was shown in the menu card, but at the same time, bill payment waiter says you have to 50/50 of the GST, and GST was not mentioned in the menu. In that case, you can assume that the price is inclusive of GST. So you can compel not to charge on the GST. अगर उसमें ऐसा मेंशन क्लियर नहीं लिखा है, और क्या लिखा है? Intimate means offer, inform करना. बेटे, Shyam is saying, sir, but company know the subscription is for 1 year, and company is sending the magazine. It means company is making the implied offer, and you have started the reading. It means you are giving his implied acceptance, right? अगर आप उसे पढ़ते नहीं, सब बंद कर रख देते कि और कंपनी इन्फॉर्म करते भैया मुझे नहीं चाहिए, या अलग रख देते, आप यूज ही नहीं करते, तब आप पेमेंट देने के लायबिल नहीं थे. एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस बाय ओरल और रिटन. Example 62, A asks B, will you purchase my car for rupees 2 lakh? B says yes, it is an express acceptance. By implied means by conduct or by performance. See the example. A reaches in a coffee house and demands the coffee. Waiter brings the and keeps the before A. Here is the implied acceptance. आप कॉफी हाउस में गए, कॉफी आपने मांगी, वेटर ने कॉफी लाकर रख दी, इसका मतलब उसने इम्प्लाइडली आपका ऑफर एक्सेप्ट कर दिया. When a businessman receives an order from a customer and execute the order by sending the goods, it is the implied acceptance. हार्वे फैसी अभी लेता हूं बेटा, इसके बाद लेता हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. देखिए इस पे एक टॉपिक है, but I have prepared this chart for you, and this chart is this only chart will explain the whole concept of communication of offer and acceptance. So please read and listen carefully. प्रियंका, I told you बेटा, मैंने 2-3 बार बता दिया, पता नहीं आप सुन पा रही हो नहीं सुन पा रही हो मेरी बात, कि हार्वे फैसी के केस में हार्वे ने फैसी से 2 क्वेश्चन पूछे. हार्वे asked 2 questions from फैसी. Will you purchase your bumper hall pen? And second question, what is the lowest price? Fessy replied only second question, not the first question. He replied that the lowest price is 900 pounds, but he didn't reply that he will want to sell or not. So only he informed only the price, and the price is not an offer. Clear? C. O has made an offer to A. O has made an offer to A on 1st January 2023. But, just a moment. Okay. But the offer is received on 3rd. O ने ऑफर किया A को 1 जनवरी को, लेकिन A के पास कब पहुंचा? 3 तारीख. A ने 7 तारीख को उस ऑफर पे एक्सेप्टेंस भेजी, और वो O के पास पहुंची है 10 तारीख को. O ने ऑफर किया 1 तारीख को. O has made an offer on 1st January, which was received by A on 3rd January. A sent his acceptance on 7th January, and which was received by O on 10th January. इसको बच्चों आप प्लीज एक बार करो, बना लो कॉपी पर, ताकि समझ में आसानी आ जाए. Some people say of you, please speak in English. कुछ कहते हैं हिंदी में बोलो. मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, just repeating my words in Hindi and English. Okay? आगे बढ़ते हैं. ठीक है. Now, offer of the communication of offer will complete on 3rd when it comes to the knowledge of it. लॉ कह रहा है कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब खत्म होगा? जब ए को मालूम पड़ जाएगा. यानी जिस इंसान को हम ऑफर कर रहे हैं
को मालूम पड़ जाए, उसकी नॉलेज में आ जाए, तब ऑफर कम्युनिकेशन खत्म होगा, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? ओ के अगेंस्ट 7 तारीख को, जब उसने एक्सेप्टेंस को भेजा, और ए के अगेंस्ट 10 तारीख को जब ओ को मिला। इसका मतलब क्या है, सुनिए। ओ कैन विड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस बिफोर 7th। O can withdraw his offer. Sorry, O can withdraw his offer before 7, यानी कि उसके एक्सेप्टेंस देने से, भेजने से पहले। एंड A can withdraw his acceptance before 10th। जब O को मालूम पड़ा एक्सेप्टेंस के बारे में, उससे पहले ही वो विड्रॉ कर सकता, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया जा सकता। O cannot withdraw his offer after 7th, and A cannot withdraw his acceptance after 10th। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब when O has sent the offer communication कब माना जाएगा? When communication of offer is completed on 3rd, when it comes to the knowledge of A, right? Offer starts, but once accepted by the offerer cannot withdraw it। एक्सेप्टर ने, ऑफरी ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर उसे विड्रॉ नहीं कर सकता, एक्सेप्टेंस से पहले विड्रॉ किया जा सकता है। ऑफर कैन बी विड्रॉन बिफोर द एक्सेप्टेंस, राइट? बट वंस एक्सेप्टेंस हैज बीन सेंट, ऑफर कैन नॉट बी विड्रॉन। एंड वंस एक्सेप्टेंस comes to the knowledge of offerer, acceptance cannot be withdrawn। एक बार जब एक्सेप्टेंस ऑफर की नॉलेज में आ गया तो एक्सेप्टर उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, इस चार्ट को ध्यान समझ लीजिए बच्चों। Sir, if before the acceptance receive O sold the goods to another, what happens? Listen, for withdrawing the offer by O must inform A before 7, before acceptance। O को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, भैया मैं ऑफर विड्रॉ कर रहा हूं, तभी विड्रॉ माना जाएगा। आपने इन्फॉर्म नहीं किया, O has not informed after about the withdrawal, and A accepted the offer, but O does not supply the goods in the contract, then A can claim the compensation। O ने ऑफर किया, 3 तारीख को पहुंचा A के पास, A ने 7 तारीख को एक्सेप्टेंस दी, लेकिन 7 से पहले ही O ने सारा माल बेच दिया। A कंपनसेशन क्लेम करेगा बाय कोर्ट। ठीक है, see the chart again। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ये मैं डिस्कस कर चुका हूं चार्ट के थ्रू, आप एक बार रीड कर लीजिएगा बच्चों। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। When offer is made by post, its communication will completed when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। जब उसके पास पहुंचेगा जिसको ऑफर किया गया, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। Communication of acceptance कब complete होगा? I have discussed once again, against the proposer when it comes to when it put in the course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor to withdraw the same, that is 7। And against the acceptor when it comes to knowledge of the proposer, that is the 10th January। Communication by omission, example 66। A offers rupees 50,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence of the case। B does not arrive on the date of hearing of the court, here the omission is an acceptance। A ने B को कहा मैं 50,000 रुपए दूंगा, आप इस दिन कोर्ट में मत आना। B नहीं आया, इसका मतलब उसने एक्सेप्टेंस किया बाय ओमिशन।
ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगेन मैं तो डिस्कस नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा इससे बच्चों। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, when an offer is made of instantaneous communication like telex, telephone, fax, or through email, the contract is only complete when the acceptance received by the offering, and the contract is made at the place where the acceptance is received. वहां मत जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है वही प्लेस माना जाएगा, उसी प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड माना जाएगा. The place at which acceptance was received by the offerer, it is said the contract was entered only on that place, right? Important point once again, communication of special conditions. Mr. Abhi is asking, sir, what if O declines acceptance on 8? He cannot decline. वो डिक्लाइन नहीं कर सकता. जब 7 तारीख को एक्सेप्टेंस निकल गया अब वो डिक्लाइन नहीं कर सकता. Listen, you have remembered that some special conditions are mentioned on the receipt, like laundry receipt, like the goods will be collected within 15 days. After that, laundry will not be responsible. These are some conditions on the back of the printed receipt. I'm talking about these conditions. Special conditions printed on the back of ticket receipt, whether in the knowledge of passenger or not, will be treated as accepted by the passenger. क्या कहा लॉ ने? कई बार आपने देखा होगा जो रसीदें होती हैं, जैसे लॉन्ड्री रसीद है या रेलवे टिकट है, उसमें कुछ कंडीशन लिखी होती है पीछे. आपने उन्हें पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये माना जाएगा कि आपने वो पढ़ लिया है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस फॉर दिस. इन द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्टर विल नॉट बी लायबल, यानी कि आप लायबल नहीं होंगे. कब? Conditions are contained in document which is delivered after the contract is complete. आपको रसीद जब मिली, you have received the receipt only after the contract is completed. Second point, conditions limiting the right of acceptor are not brought to the notice of acceptor. ये बताया नहीं गया हो एक्सेप्टर को कि भैया इसके पीछे कंडीशंस भी हैं, राइट भी हैं. बी और सी पॉइंट आर ऑलमोस्ट सेम पॉइंट बच्चे. Document does not give reasonable notice on its face that it contains certain special conditions. क्या मतलब? 3 चीजें हैं. पहला, आपको डॉक्यूमेंट, you have received a document after the contract is completed. Second, आपके जो राइट हैं, जो उनके जो जिसने आपको रसीद दी है उसने अपने राइट के बारे में बताया नहीं हो आपको. तीसरा, डॉक्यूमेंट पे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट पे ये नहीं लिखा हो कि पीछे कुछ कंडीशन लिखी हैं, लाइक प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ, पन्ना पलटिए, पीछे भी देखिए, ये ऐसा नहीं लिखा हो तो एक्सेप्टर लायबल नहीं होगा. सी द एग्जांपल. आई थिंक आफ्टर दिस एग्जांपल दिस कांसेप्ट विल बी क्लियर टू यू. ए पैसेंजर डिपॉजिटेड ए बैग in the clock room at railway station. The acknowledgement receipt given to him carried on the face of it the word "fee bag" on the condition limited the liability of railway for any package of ₹100. The bag was lost. Passenger claimed 2,500 being its actual value. Pleading that he had not read the condition, held the passenger will not succeed whether he read them or not. क्या मतलब? पैसेंजर ने एक बैग जमा किया क्लॉक रूम में, रसीद में रसीद पे लिखा था प्लीज सी बैग, इसके पीछे कुछ लिखा है पढ़ो. पीछे लिखा हुआ था कुछ भी लॉस हो जाए रेलवे केवल 100 रुपए का कॉम्पनसेशन देगी. पैसेंजर का बैग खो गया, पैसेंजर ने 2,500 रुपए मांगे और ये कहा सर मैं तो कंडीशन पढ़ नहीं पाया, मुझे तो पढ़ी नहीं थी, तो मैं मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. कोर्ट सेज नो. वेदर यू हैव रीड और नॉट, condition will be applicable on you because in the front of the receipt it was mentioned C bag and you have ignored, so railway will liable only for 100 rupees. But if in the above example C bag was not mentioned on the front of document, passenger will succeed. अगर C bag नहीं लिखा होता तो पैसेंजर 2,500 रुपए क्लेम कर सकता था. रिवोकेशन वी हैव डिस्कस कि 7 तारीख से रिवोकेशन करना है ऑफर का और एक्सेप्टेंस 10 तारीख से.
Again, this is the important question for examination point of view. The question, direct question can be asked for 6 marks or 5 marks. Please define the mode of revocations. कितनी तरीकों से ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोक किया जा सकता है? फर्स्ट इज बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, यानी बाय इन्फॉर्मिंग, by communication of notice of revocation by the offerer at any time before its acceptance is complete as against him, that is before 7. Example 69. At an auction sale, A makes the highest bid for B's good. He withdraws the bid before the fall of hammer. The offer has been revoked before acceptance. ए ने हाईएस्ट बिड बनाई, ऑफर किया, हाईएस्ट बिड ऑफर की, लेकिन फॉल ऑफ हैमर यानी ऑक्शन कंप्लीट होने से पहले ही उसने ऑफर विड्रॉ कर लिया, तो ये रिवोकेशन वैलिड माना जाए. बाय लैप्स ऑफ टाइम, इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, इफ हाउएवर नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड, इट लेफ्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए रीजनेबल टाइम. मतलब इफ ए मेड ए ऑफर टू बी, will you purchase my car for 1 lakh rupees? Reply within 3 days. And B, if B does not reply, did not reply in 3 days, offer is left, right? But if the time limit is not mentioned in the offer, then reasonable time will be considered. And what is the reasonable time? I always say depend upon the situation. By non-fulfillment of the condition precedent to the acceptance, कोई condition लगी हुई थी offer में, वो accept नहीं की. See the example number 70. As a seller agrees to sell certain goods subject to the condition that B, the buyer, pays the agreed price before a certain date. If B fails to pay the price by that date, the offer stands. S ने B को कहा कि आप मुझे ये प्राइस भेज दीजिए एक डेट से पहले. B ने प्राइस नहीं बेचा, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर रिवोक हो गया. ऑफर की डेथ हो जाती है या काउंटर ऑफर दिया जाता है या ऑफर प्रेस्क्राइब मोड में नहीं एक्सेप्ट किया गया, मैं अब डिस्कस कर चुका हूं, और ऑफर ने इन्फॉर्म कर दिया कि भैया आपने प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा. या लॉ चेंज हो गया, यानी कि लॉ बदल गया और ऑफर को या एक्सेप्टेंस को आप वैलिड नहीं मान सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद मिस्टर ए for purchase of certain land, but after the acceptance the land was taken over by the government by changing the law. In that case offer and acceptance all are withdrawn. क्लियर इतनी बात? तो ये पॉइंट थे हमारे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. प्लीज एक बार इनको 7 पॉइंट्स पर लर्न कर लीजिएगा. नाउ टाइम फॉर पेनल्टी शूटआउट 4. Mr. Teja, listen, you have written that if I have sent acceptance on 7th and after that O has sent rejection of offer, it that case which reaches first is valid? No. Okay, we are discussing the law provisions, and according to the law, offer can be withdrawn only before the acceptance. If acceptance has been made, offer cannot be withdrawn. ठीक है? पेज 1.25, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, सुन नहीं पाया बेटे. स्टडी मॉडल की बात कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं पेनल्टी शूट आउट के लिए 4th. इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी आज के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, when the proposal or acceptance is made orally, the promise is said to be made express, implied, accepted or rejected.
हर्ष, मैं आज अभी आईसीआई क्लास के बाद आईसीआई से बात करूंगा कि क्या दिक्कत है, आप लोगों के नोट्स अभी अपलोड तो नहीं दिख रहे हैं आपको। तो डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम होगी टेक्निकल तो सॉल्व हो जाएगी। बाकी टेलीग्राम पे कोई हम सॉल्व आपको पोस्ट नहीं कर सकते नोट्स को, ठीक है। Niranjan is Niranjana is asked, sir, if the revocation letter is sent on 5th but rejects to accept on 8th, again that's problem. When it reaches to the acceptor, Mr. A, then the commission will be completed. So on 8th, acceptance on 7th cannot be withdrawn. Next question. Kamal received an offer by letter. He gives his acceptance by letter, which are duly stamped, addressed, and put in the letter box. But pin code on the letter was wrong. This amounts to valid acceptance, not valid acceptance, not in the prescribed manner of acceptance, none of the above. कमल ने लेटर भेजा लेकिन एड्रेस में कुछ गलती कर दी, तो क्या वो कंप्लीट माना जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, या वॉट एवर बी, यू हैव टू डिसाइड. Mr. Upendra, you can download the study model from the site, ICI site. Yash is saying, sir, notes are uploaded in the app. जो आपकी ICI की ऐप है उसमें नोट्स अपलोड हो चुके हैं. एक बच्चे ने कंफर्म भी कर दिया मुझे, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए ऐप से बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. A proposal when accepted becomes a Neeraj made an advertisement to sell his car for rupees 2 lakh. Gaurav come to the Neeraj for purpose of his car, for purchase of his car. Neeraj denied to sell the car. Can Gaurav compel Neeraj to sell his car? Yes, no, either A or B, none of the above. सिंपल सा फंडा बच्चों, अगर ये इनविटेशन टू ऑफर है तो डिनाई कर सकते हैं, अगर ये ऑफर है तो डिनाई नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव द राइट आंसर. Next question. Communication of acceptance is complete as against the proposer when only when it put in the course of transmission, when it comes to knowledge of the proposer, when it communicated to the acceptor, none of the above. Next. On the face of a laundry receipt, it was mentioned that to look for the terms and conditions, look behind. Mr. A got the laundry receipt but did not read the terms and conditions. He is not bound by the terms and conditions. He is bound by all the terms and conditions, whether he read or not. Both of the above, none of the above. And the last question. A makes proposal to B to sell his house for rupees 5 lakhs. The letter is posted on 10th June. The letter reaches B on 12th instant. The offer is said to have been communicated on 10th June, 12th June, any of the above, none of the above. चलिए बच्चों चेक करते हैं. When proposal or acceptance made orally, it is an express promise. Next.
Kamal received an offer by letter. He gives his acceptance by letter, which are duly stamped, address and put in the letter box. But pin code was wrong. पिन कोड सही नहीं था, तो इसका मतलब एड्रेस गलत हो गया, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाए. आप एक्सेप्टेंस भेजिए तो कम्युनिकेट ही नहीं होगी ना बेटे. अगर एड्रेस गलत होगा, इफ द एड्रेस इज रॉन्ग, then acceptance letter will not reach to the offerer. ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाए. Some of you have mentioned that it is option C. C is not right answer because prescribed manner की तो बात ही नहीं है. आपने तो जो नॉर्मल वे है, आप एड्रेस लिख रहे हैं वो प्रॉपर नहीं लिखा है आपने. Proposal when accepted becomes promise. Next. ये क्या है? Advertisement sale of a car. It is the invitation to offer. Can Gaurav compel? Answer is no. Invitation to offer को हम बाउंड नहीं कर सकते. ऑफर बाउंड होता है एक बार एक्सेप्ट करने. नेक्स्ट. Communication of acceptance is complete as against the proposal only when it is put in the course of transmission. Next. On the face of a laundry receipt, it was mentioned, then he is bound by all the terms. Next. A makes a proposal to B to sell his house for ₹5 lakh. Letter is posted on 10th but received on 12th. तो क्या माना जाएगा? 12th को communication माना जाएगा. So who are the lucky ones? First one is Miss Komal Preet Kaur. Conversation beta. Second one. Miss Vidipta Chaudhary. Congratulations beta. And the third one, Miss Vidisha Day. Congratulations all of you. So before before going for end, we are just taking the revision of what we have discussed today.
Offer. A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. Types of offer we have discussed: general offer, specific offer, cross offer, counter offer, or open offer. Legal rules: there must not be a social offer. Offer must be certain, definite, must be communicated to the person to whom it is made, must be made with the view to obtain the consent of offeree. Offer may be conditional, but acceptance never be conditional. Must not contain the term the non-compliance of which amount to acceptance. Must be specific or general. May be express or implied. An offer is different from the invitation to offer. A statement of price is not an offer. Acceptance: a proposal or offer is said to have been accepted when the person to whom proposal is made signifies his assent to the proposal to do or not to do something. Legal rules of acceptance: absolute and unqualified, yani ki no if, no but, only yes. Acceptance should be communicated to the person who has made the offer, should be in mode prescribed, should be within time limit. Silence is not an acceptance. Acceptance may be expressed or implied. Communication of offer: remember the chart OA: 1 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 1 January, 3 January, 7 January, and 10 January. Offer, communication of offer completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, that is on 3rd. Communication of acceptance is completed as against the proposal when it is put into the course of transmission to him, so as to be out of the power of acceptor to withdraw the same, that is on 7th. As against the acceptor when it comes to the knowledge of proposal, that is on 10th. Communication of acceptance by post completed as against the proposal when the letter of the acceptance is posted, and as against the acceptor when it reaches the proposal. Acceptance over telephone, telex, or fax completed when the acceptance is received by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received. Communication of special conditions printed on the back ticket, back of ticket, receipts, etc., should be taken as accepted by the passenger whether they have read or not. Exceptions: यहाँ पर वो liable नहीं होगा when it is mentioned on the front that there is some condition behind the receipt, and receipt was received by the person after the contract is completed. Revocation of offer and acceptance: it is maybe the important question for exam, the way in which the offer or acceptance can be completed. By communication of notice, by lapse of time, non-fulfillment of conditions, by death or insanity of offerer, counter offer is made, या offer is acceptance not as my prescribed mode, or if the law is changed. ठीक है बच्चों, this I think time is over now. This is from my side for today class. In the next class on the Monday, we will have the test for day 2 and the revision once again. And after that, we will start the unit 2 consideration. ठीक है, thank you so much बच्चों. आज के लिए इतना ही काफी. प्लीज रिवीजन कर लेना बच्चों. रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ये सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा अगर आज आपने रिवीजन नहीं किया. So thank you so much. Thank you, and please get revised. Thank you. Binu ji, the class is over now.